गाज़ा पर इजराइल के हाल ही में किए गए हमले में हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को भारी पीड़ा और नुकसान में डाल दिया गया है। स्थिति इतनी ख़राब रही है कि माँ बाप बम धमाकों में मारे गए अपने खुद के बच्चों को पहचानने में नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए हम कार्गो हैंडलिंग के क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न प्रमुख बंदरगाहों के भारतीय बंदरगाह और डॉक कर्मचारी अपने सदस्यों से आह्वान करते हैं कि वह भी अब फिलिस्तीन इजराइल में सैन्य सामग्री ले जाने वाले किसी भी जहाज़ के साथ काम करने से सख्त मना करें। हम तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हैं। जिम्मेदार ट्रेड संगठनों के रूप में हम शांति के लिए अभियान चलाने वालों के साथ अपनी एकजुटता की घोषणा करते हैं। I have written an article saying that is Netanyahu imitating Hitler while Biden is sleepwalking to electoral disaster. देश के 11 प्रमुख बंदरगाहों पर 3500 से अधिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जल परिवहन श्रमिक संघ ने इजराइल या किसी अन्य देश से हथियारबंद माल को लोड या अनलोड करने से इनकार करने का फैसला किया है। हम बंदरगाह कर्मचारी श्रमिक संघों का हिस्सा हमेशा युद्ध और निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्या के खिलाफ खड़े रहेंगे। गाज़ा पर इजराइल के हाल ही में किए गए हमले में हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को भारी पीड़ा और नुकसान में डाल दिया गया है। स्थिति इतनी ख़राब रही है कि माँ बाप बम धमाकों में मारे गए अपने खुद के बच्चों को पहचानने में नाकामयाब रहे हैं। इस समय हमारे देश के सदस्यों ने सामूहिक रूप से सभी प्रकार के हथियारों युक्त कार्गो को संभालने से इनकार करने का निर्णय लिया है। इसीलिए हम कार्गो हैंडलिंग के क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न प्रमुख बंदरगाहों के भारतीय बंदरगाह और डॉक कर्मचारी अपने सदस्यों से आह्वान करते हैं कि वह भी अब फिलिस्तीन इजराइल में सैन्य सामग्री ले जाने वाले किसी भी जहाज़ के साथ काम करने से सख्त मना करें। इसीलिए हम तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हैं। जिम्मेदार ट्रेड संगठनों के रूप में हम शांति के लिए अभियान चलाने वालों के साथ अपनी एकजुटता की घोषणा करते हैं। स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग में हम दुनिया के मजदूरों और शांतिप्रिय लोगों को साथ खड़ा होते देख हमें बेहद खुशी होगी। इस पे हस्ताक्षर हैं टी नरेंद्र राव के, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ऑल्सो वन स्मॉल रिमाइंडर, जो आरवा का ऑडियो बजा था उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे कंपनियां, जो छोटी बातें करने की बात हो रही थी, उन कंपनियों के नाम हमने कुछ पोस्टर्स में यहाँ पे छपवा रखे हैं। दीज पोस्टर्स आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड मेंशनिंग द नेम्स ऑफ ऑल द कंपनीज दैट यू कैन बॉयकॉट। And most of them have read, and most who have read you have understood you. Dear fellow fighters for justice, because Palestine means justice. You know, we speak about the genocide being committed by Israel. Correct. But to get the full picture, we should say the genocide being committed by Israel and permitted by the international community with very few exceptions. Now, the ICJ, I will not say that it is neither international nor a court of justice, as Jawaharlal Nehru once said about the ICS. I have the highest of respect for the ICJ, but at the same time, I should say that it took a small step in the right direction. A calculatedly small step. Another thing is that a strange use of the English language. The mention was made by Mr. Grover, and I agree with every word he said,
plausible. Now, in the text they say, ICJ asks itself a question. Have the violation of the rights of the group as alleged by South Africa have been committed by Israel? And then it says plausible rights. The adjective definition of genocide, and as already pointed out, how many? More, about 26,000 of them had been killed till then. 29. No. I mean, when the ICJ verdict was being given. So, well, what is the most fundamental right? The right to life. If you don't have the right to life, what is the use of all other rights? And do the Palestinians have that right? Well, I don't think we have to tell the ICJ about the UDHR, Universal Declaration of Human Rights. So, why did they use the word plausible? Of course, there can be legal argument, lawyers use words, according in their own fashion. But ICJ is meant to give a verdict which is understandable for the international community, not only for lawyers. Now, so my short answer is that, or rather, the question, why did the ICJ fail to call a spade a spade? Well, the short answer is, the ICJ did not give a verdict without fear or favor. Justice, the judge is supposed to give a verdict without fear or without favor. Now, that's not what ICJ did. But anyway, this is only the beginning. But now comes another question. Eminent jurists have said it would take months and months, if not longer, for the ICJ to determine whether genocide was being committed. Let us look at the big picture, because ICJ is only part of the big picture. It's the United Nations highest court, and we know that the Security Council has till now failed. Why? That is because the West, under the leadership of the United States, speaks about a rule-based international order, but that applies only to the West. What happens to the rest of the world doesn't matter. A Western life is very valuable. Non-Western lives, well, they do not practically count. When, civilians die in Ukraine, the West, the governments and the media, correctly, they speak about it. But when civilians die elsewhere, well, sometimes they don't have the time. Now, about Holocaust. I had written an article saying that, is Netanyahu imitating Hitler while Biden is sleepwalking to electoral disaster? Well, it seems that is happening. The only difference between the Holocaust and what is now happening, that this one is televised. That Holocaust, well, we came to know much later. But what is sad is that despite its being televised, the international community is permitting it to continue. Now, to go back to ICJ for a second, 50 states have
transmitted their intention to make presentations. I went through the list. I could not locate India's name. Well, the leader of the Global South, Vishwaguru, Vishwamitra, well, please speak up. Let a message go from here through the Kartavya path to the South Block. To New York, the Security Council, to The Hague, the ICJ, and to Palestine. Question: is India a diminished democracy? I wouldn't say that. We are not a diminished democracy. We are a self-correcting democracy. And we shall overcome. This too shall pass. Thank you so much. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।